Assalamu alaikum and welcome back to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia and this is the second part to the show. Just before the break we were looking at how to make a successful spouse application where somebody in the United Kingdom wants to sponsor their husband or wife to come to the UK to join them on a permanent basis. And we looked at a couple of different areas that need to be satisfied. We looked at the TB test requirement, the English language requirement, how the marriage has to be valid in law, what is the immigration status of the sponsor who's calling somebody to the United Kingdom, are they British, etc. So we looked at a number of areas. And what I now want to do is look at some of the other key requirements relating to income, relating to accommodation, and relating to the marriage, whether the marriage is genuine and subsisting or not. So we'll look at that. But as always, it's a live show, so the number that you can call on will appear at the bottom of your screen. So whatever your questions relate to, whether it's an immigration matter or any other matter relating to English law, please do pick up the phone and give us a ring, and inshallah I should be able to deal with that. Let's just return to our topic for the day and how to make a successful spouse application. What do you need to do to make sure your husband and wife can come to the United Kingdom legally, properly, and hopefully with the first application being successful and you avoiding any appeals or any re-applications. So we've looked at some of the key requirements. One of the problem areas nowadays with these applications, and in practice what I tend to do is to look at this first with the husband and wife in the UK, the sponsor in the UK. One of the first things that I look at is finances. You've got married or you're going to get married abroad, that's all well and good. Accommodation never presents a problem and it's all genuine and we should be able to back it all up. So, but the problem always seems to be relating to income. Whether somebody is in employment, whether they've got sufficient income, and even though they may have proper employment, proper income, whether the documents back that up or not. People might get cash in hand, etc. And they may have been working for that business for many, many years, but that's still problematic. So the key thing in my experience with these applications is ensuring that the income requirement is met. Now, under the current rules, there are very many different ways in which you can meet the requirements. There's no one-size-fits-all approach anymore. It's various different ways. General rule is that you must be earning 18,600, but there are exceptions to that. For example, somebody who's in receipt of disability benefits or carers allowance don't need to meet that requirements, and that's something that we can look at later on. But the vast majority of applicants, I would say 90%, have to rely on their sponsor in the UK earning £18,600. Now, how is that requirement met? Even for that, depending on your circumstances, there are different rules which apply. So if we run through some of the rules, so it just gives you an idea about how complex this area has become. And with each different situation, you have specific rules which relate to that. So for example, the most common scenario that you come across is where somebody is employed and they've been employed for a while. I'll look at that in greater detail after I've taken the next call. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है जी कि मेरी बेटी है, वो सिंगल मदर है, उसके दोनों लड़के हैं जी। ओके। तो उसका यहाँ पे जो है ना पहले डिवोर्स हो चुका है जी। ओके। तो अब वो अपने पेरेंट्स को जो है ना स्पॉन्सर करना चाह रही जी। एक्चुअली आई एम हियर ऑन ए विजिट वीजा नाउ जी। ठीक है। तो ठीक है, मेरी वाइफ भी पहले विजिट पे आके जा चुकी है, अभी मैं यहाँ पर हूँ जी। तो अब हमें जो है ना परमानेंट रेसिडेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा मेरी बेटी को? जी, असल प्रॉब्लम क्या है कि जो यूके रूल्स है ना, एज फार एज पेरेंट्स आर कंसर्न, तो पहले एक टाइम था कि पेरेंट्स को भी वो वीज़ा देते थे यहाँ सेटल होने के लिए। जो भी पेरेंट्स 65 ओवर है उसको यहाँ वो राइट देते थे रहने का, मगर वो लॉ उसने 4-5 years ago
बंद कर दिया. अच्छा. اور اس میں ایک اور رول وہ لائے ہیں جس کے پیرنٹس بیمار ہے اور اتنے بیمار ہے کہ اس کو کسی کا کیئر کی ضرورت ہے. سو دا چائلڈ نہیں وہ دیکھیے وہ کرائٹیریا وہ میٹ نہیں کرتا. رائٹ. Because I'm having my two sons, they are well off, they are is working, so alhamdulillah I got property back home. اب صرف ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ بیکاز مائی ڈاٹر شی از اے سنگل مدر, سو چلڈرن آر ویری اسمال 8 and 5 years, تو یہاں پہ انہیں ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے بچوں کو جب وہ, کیونکہ شی از ورکنگ ناؤ. جی جی ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے نا ہم اس کے جو ہے نا ہمیں کوئی ان کی ڈپینڈنسی نہیں چاہیے. جسٹ ہم یہاں پہ رہے پرمنٹ, یا تو جو ہے نا ہمیں ویزا ایسا ملے کہ جو ہے نا وی کین کنٹینیو ہیئر. دوسری چیزیں ہمیں ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ بیک ہوم وی آر ویل آف. جی تو یہ چیزیں نہیں ہے. صرف ہمیں لانگ اسٹینڈنگ کا جو نا, ادروائز یہ ہوتا ہے کہ ایوری ٹائم وی ہیو ٹو گو ہوم, گیٹ ویزا اسٹیمپ اینڈ کم بیک اگین. میرا اس سے پہلے 5 years کا ویزا تھا, وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. دین I got only 6 months visa. I am here now for last 2 months. تو اس میں ایشو یہ ہو رہا ہے کہ while I am here, میں just as a child minder بنا ہوا ہوں. I cannot drive. My age is 59. My wife age is almost 55. تو اب یہاں پہ صرف ہم گھر کے اتگے رہ گئے ہیں. جی جی. تو اگر ہمیں کہیں جانا ہے تو میرے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس وہ انڈیا کا بھی ہے, میرے پاس سعودی عربیہ کا لائسنس ہے, مگر آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈرائیو ہیئر. اور میں لائسنس بھی پتہ نہیں آئی کین گیٹ دا لائسنس اور ناٹ. میں نے ٹرائی کیا تھا, وہ ایز پر دا ویب سائٹ دس از یو ہیو ٹو اسٹے ہیئر فار 185 days اور سم تھنگ لائک دیٹ. سو اب ہم صرف بانڈ ہو کے رہ گئے ہیں گھر کی حد تک کے. تو ہمیں تھوڑا سا اس طریقے سے یہ چاہیے کہ وی کین گو آؤٹ, وی کین ڈرائیو, اور پھر ہمیں پرمنٹ ریسیڈنسی کی طرح جو ہے نا ہمیں کچھ آپشن چاہیے. اس کا کیا یہ جو آپ کے ڈاٹر کے بیسس پہ ہے نا, ڈاٹر کی بیسس پہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے. امیگریشن رولز میں بالکل کچھ نہیں ہے. سو ڈاٹر کی بیس پہ ڈاٹر کو ہیلپ کرنے کے لیے وہ کام پہ جا رہی ہے, چلڈرن کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہ اکیلی ہے, وہ آن دیٹ بیسس آپ اپلائی نہیں کر سکتے. آپ کو اونلی آپشن یہ ہے کہ آپ کی ان یور اون رائٹ کوئی اور اگر ویزا کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں. فار ایگزامپل ڈفرینٹ ویزاز ہوتی ہے. فار ایگزامپل انٹرپرنر کی ویزا ہوتی ہے, اس پہ you need a lot of money for that. You need about 200,000 pounds in savings. So basically point کیا ہے کہ ڈاٹر کی بیسس پہ ٹو ہیلپ ہر واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, وہ بیسس پہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو کوئی اور ویزا کیٹیگری دیکھنی پڑے گی, بزنس کی ویزا یا تو ورک پرمٹ کی ویزا, جو بھی ہے. یو ہیو ٹو لک ایٹ سم تھنگ ایلس. آپ کی ڈاٹر کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے؟ جی ہاں, میری بیٹی ڈاٹر کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, اینڈ آئی ایم اے پروفیشنل گائی, سو آئی کین اپلائی فار اے جاب ویزا اور ورک ویزا ہیئر. جی جی. سو بیسکلی آپ کی یو کے, اف یو وانٹ ٹو اسٹے ان دا یو کے, یو ہیو ٹو لک ایٹ how you qualify in your own right, whether it's an entrepreneur visa, you want to start a business here and you've got savings of 200,000 pounds. That's one option. Secondly, whether you can get some kind of work permit, so a professional job with a company in the United Kingdom. So that's another option. So because your daughter has a British passport, if she went to a European country, so for example wo agar Ireland chali jaye, to Ireland, if she goes to Ireland, to another European country with her British passport, to different rules apply to her. European law usko apply hoga, aur European law mein kya hai ki aap parents ko sponsor kar sakte hain even under the age of 65, sponsor kar sakte hain. Problem kya hai yahan کہ in the UK the European laws don't apply. In the UK آپ کے ڈاٹر کے بیسس پہ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے اون بیسس پہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اور ایون ان دیٹ دی آپشنز ریئلی آر لمیٹڈ ٹو بزنس ویزا, انٹرپرنر ویزا جو ہوتی ہے, اینڈ سیکنڈلی 200,000 is a big money, you know. ہاں, تو میں تو آپ کو آپشن بتاتا ہوں نا, اگر نہیں ہے تو forget that نا.
मैं तो क्या Yeah. if you don't have the money, don't So apply. I can apply for a job visa here or work visa? You can apply. But you have to find a company which is prepared to sponsor you. I see. You have to find it. Yeah. So you have to look at it in your own right. कि आपके own right में कुछ आपको आप वीज़ा मिल सकती है या नहीं. The problem is कि the immigration rules are very, very strict nowadays. So apart from that, there is no other option, unfortunately. I see. Jazakallah. Thank you very much for your call. Thank you. Thank you. We'll take our next call. Hello, Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम. जी. Thank you for calling. जी, आपका question क्या है? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अपने हस्बैंड के वीज़े के लिए अप्लाई करना है. जी, ठीक है. ओके. तो मेरा अकोमोडेशन का थोड़ा प्रॉब्लम है कि जो वो हमारी टेंसी मेरी ग्रैंड माँ के नाम है. Okay. तो वो मेरे नाम भी नहीं हो सकती क्योंकि वो कहती हैं कि ये शेल्टर है ओल्ड पीपल के लिए, तो और किसी का नाम नहीं ऐड कर सकते. जी. प्लस वो लॉयर ने कहा था कि उनसे लेटर ले लें कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तो वो लेटर भी नहीं दे रहे. Right, that's fine. इसकी you might be okay. आपको क्या देखना है कि जो ग्रैंड मदर के पास जो टेनेंसी एग्रीमेंट है ना, इसमें देखना है आपने कि टेनेंसी एग्रीमेंट में क्या लिखा है फैमिली मेंबर्स के बारे में, वो रह सकते हैं या नहीं. जी उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वो 5 पीपल रह सकते हैं 2 बेडरूम के हाउस. ये जो है ना कि काउंसिल से लेटर लेना या योर हाउसिंग एसोसिएशन से लेटर लेना, ये ज़रूरी नहीं होता है. अगर आपकी टेनेंसी एग्रीमेंट ये है, वो कहते हैं कि सिक्योर्ड टेनेंट. अगर आपकी ग्रैंड मदर सिक्योर्ड टेनेंट है, नॉर्मली 6 मंथ्स या 1 साल के बाद सिक्योर टेनेंसी देते हैं ये पब्लिक हाउसिंग वाले. तो सिक्योर टेनेंसी का एक एडवांटेज ये है कि जो टेनेंट है, तो टेनेंट उसका अपनी फैमिली मेम्बर्स को घर में रहने की इजाज़त खुद दे सकते हैं. वो हाउसिंग के लेटर की ज़रूरत नहीं होती है. तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप टेनेंसी एग्रीमेंट को देखो. अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखा है, and I'm 90% sure, 99% sure, the tenancy agreement will say कि the tenant is allowed to have family members staying there. So एक तो टेनेंसी एग्रीमेंट डालेंगे, ग्रैंड मदर का कागज़ डालेंगे कि उसने इजाज़त दे दी कि आप रह सकते हैं और आपका हस्बैंड भी रह सकते हैं. और थर्डली आप कोई सर्वे के पास कोई रिपोर्ट बना लो कि घर में इनफ जगह है ग्रैंड मदर के लिए, आपके लिए और आपके हस्बैंड के लिए. ये काफ़ी होना चाहिए. हाउसिंग वाले या काउंसिल की लेटर की इतने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो नहीं देंगे तब भी काम आपका चल जाना चाहिए. जी ठीक है. ये मुझे पूछना था कि कहते हैं लेटर चाहिए, तो हमने उनसे काफ़ी दफ़ा कहा तो वो कहते हैं नहीं चीज़ों में आप इन्वॉल्व नहीं होते. हाँ, वो नॉर्मल है. लॉयर्स कहते हैं कि लेटर लाओ, लेटर वो ठीक है. अगर लेटर मिल गया तो ठीक है, मगर लेटर की ऑलवेज ज़रूरत नहीं है. अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखा है, आप सोचो ना, कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखा है कि आप जो टेनेंट है, आपकी ग्रैंड मदर, आप आपकी फैमिली मेम्बर्स को इजाज़त दे सकते हैं, वो आपके घर में रह सकते हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, तो फिर काउंसिल के पास हमको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना. ग्रैंड अगर टेनेंसी एग्रीमेंट उसको बता दे, ग्रैंड मदर ही वो लेटर दे दे, तो वो इनफ है आपके लिए. तो आपको लॉयर को इसके बारे में बात करो कि लुक, मैं टेनेंसी एग्रीमेंट काउंसिल से जो कोई लेटर्स आए हैं कि वो सिक्योर टेनेंट है, तो वो बता दो कि लुक, टेनेंसी एग्रीमेंट में लिखा है कि फैमिली मेम्बर्स रह सकते हैं. तो दैट शुड बी सफिशिएंट. मैंने खुद किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया है. जी ठीक है. ये मैं लॉयर कह रहे थे कि उनसे अगर लेटर मिल जाए तो वो अच्छा है, तो हमने काफ़ी ट्राई किया और मिल नहीं रहा. समटाइम्स वो नहीं देते हैं, इसलिए मैं भी क्लाइंट्स को यही कह रहा था कि आप हाउसिंग से लेटर ले लो, मगर जनरली स्पीकिंग बहुत डिफ़िकल्ट है उससे लेटर लेना. तो फिर अभी उन्हें बंद कर दिया है. सिर्फ ये जो मैंने आपको बात की है, टेनेंसी एग्रीमेंट, ग्रैंड मदर का लेटर, हाउसिंग रिपोर्ट, इससे काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी ठीक है. ठीक है ना. और जज़ाकल्लाह, आपने फ़ोन किया. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Okay, Assalamu alaikum. Good hafiz. So that deal. We'll take our next call. Hello, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Brother, I want to find out, my mom came over this country in 2008. Ji. And she's been here about 10 years. Ji. And she came as a visitor. Ji. A couple of applications I put in and they've been rejected. I understand. Ji. So I just went to see one solicitor and he said if you put the definite stay application, they might give her 2.5 year visa. For every 2.5 years you need to renew, and
then she can travel as well. But she's 71 years old. I've got nobody back home, and that's the whole story. So, brother, the last application that you made, which obviously was refused, when was that? Well, that's 2016. I made 16. The reality is they will not grant anything. That's the reality at the moment. If you make an indefinite application, you will pay a fee of £2,300 and it will be refused. It will, in my view, be a waste of money. Because the immigration rules basically say, in relation to overstayers, because mother is overstay at the moment, what they basically say is that you need to have lived in the UK for 20 years. And obviously she doesn't satisfy that requirement because she's only been here for 10 years. And the Home Office is very strict. They will not exercise any discretion. They won't say, look, okay, Imam's 71 years old. Who's going to look after her? If she goes back, it's going to be very difficult for her. She can't travel, etc. They won't take any of that into account. And they will refuse the application. The reality is, in my experience, they won't even give her a right of appeal either. Okay, so you'll make the application. It will take 6 months to process, maybe 1 year to process, and then it will be refused. So if you want to make an application, fair enough, but it will be refused. I can almost guarantee that. In terms of a right of appeal, 99% there will be no right of appeal either. So nothing will happen. Now, so to some extent, there's no point applying. Because your mother is 71 years old, the reality is that the Home Office generally don't take enforcement action against them. And even if they do say, look, we want to try and remove your mother, if you are able to demonstrate, she is unwell, she's not mobile, she had maybe whatever problems that whatever she's got. So she's got type test, also she's in the wheelchair as well. So they're not going to remove her. What I would do is just don't bother making applications. You're going to waste money. You're going to waste £2,300 on an application. Lawyer's fees £700-800. You're going to be £3,000 down, and it will be a complete waste of money. If she's in a wheelchair, I'll make it easy for her, but all she needs to do is just sit it out here. She doesn't need to make any applications. Realistically, they will do nothing to remove her, brother. Okay, Jazakallah, thank you very much for your call. We'll take our next call. Hello, Assalamu alaikum. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी जी भाई एक छोटा सा क्वेश्चन था, यही पूछना था मेरे को जी। मैं इस कंट्री में आके तकरीबन 40 साल हो गया। मेरे पास, मेरे बच्चों के पास सब ब्रिटिश पासपोर्ट है, मेरे पास नहीं है जी। ओके, मेरा जो है वो इंडेफिनिट वीजा है जी। ओके, तो अभी क्या कर सकता हूँ? आपकी एज क्या है? आपकी एज आप 65 से ओवर है या नहीं, मैं 63 का हूँ। 63 का है जी, ठीक है। तो आप यहाँ ही लास्ट 5 इयर्स आप यूके में रहे हैं या बाहर रहे हैं? जी, मैं इधर ही रहा। आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द ओनली इश्यू रियली इज दिस कि आपको जो इंग्लिश का टेस्ट है वो करना पड़ेगा और लाइफ इन द यूके टेस्ट भी करना पड़ेगा। अगर आप 65, इफ़ यू बिकम 65 और 65 अगर आपकी एज हो जाए और 65 के बाद आप अप्लाई करें तो इंग्लिश का टेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। सो आपकी चॉइस है। अभी अप्लाई करेंगे तो ये 2 रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करना पड़ेगा। 65 पर करेंगे तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट। अच्छा, जो मैं अभी इंडेफिनिट जो वीज़ा है जी, तो वो इंडिया में जा सकता हूँ? जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वो पासपोर्ट चाहिए, इंडेफिनिट लीव वाली जो पासपोर्ट है वो चाहिए। और अगर आपको लगता है कि बेटा बहुत पुरानी पासपोर्ट ले जानी पड़ती है, उसके बाद की पासपोर्ट ले जानी पड़ती है, तो फिर आप ये करो कि आपके जो इंडेफिनिट है जो पासपोर्ट के अंदर में है वो ट्रांसफ़र करा दो कार्ड के ऊपर। बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट है, इस पे ट्रांसफ़र करा दो। वो करने में रफली आपको 3 मंथ्स लगते हैं। होम ऑफिस की फ़ीस रफली अबाउट 350 ऐसा कुछ होता है। सो आप आपका इंडेफिनिट कार्ड पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो। ज़रूरी नहीं है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। तो कितने दिन में, कितने महीने में मिल जाता मेरा कार्ड? कार्ड अबाउट 3 मंथ्स लगता है।
3 मंथ लग सकता है। जी, आप एक वो प्रीमियम सर्विस यूज़ कर सकते हैं, मगर प्रीमियम सर्विस में पैसे ज़्यादा लेंगे, वो एडिशनल £600 लेंगे। मगर ये सब ज़रूरी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और समटाइम्स आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। बेटर ये है कि आप वेट करें until you become 65 and just get nationality at that stage. वो पैसे 600, 700, £800 यहाँ स्पेंड करेंगे, just wait, और 65 पे नेशनलिटी कर लो। आपने एक ना टाइम वेट किया है, 1.5 years is not too bad। वेट कर। ओके, या जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल है, जज़ाकल्लाह। We'll take our next call. Hello, Islam. Hello, I think the call's been dropped. Sorry, we've had a number of calls and people have had to wait to get through. Just before we started taking our calls, we were looking at spouse applications, and where we had reached is to look at the income requirement. And what I was saying was that the law, even relating to income requirements for husbands and wives who are coming to the UK, it's very, very complex. And what I'll do in the next show is look at that in greater detail, because we've only got a few minutes left now. But to give you an example, the standard rule is that you need to be earning £18,600. There are exceptions to that, where somebody's in receipt of disability benefits or carers allowance. But leaving that to one side, even if you look at the 18,600 rule, there are different rules which apply to somebody who has been employed for 6 months or more, somebody who's been employed for less than 6 months, somebody who is self-employed as a partner in a business or as a sole trader, somebody who's self-employed operating a limited company, somebody who works, doesn't own the company, but works in a company which is owned by family members, somebody who is relying on rental income to meet the 18,600 requirement, somebody who is relying on dividend income to meet the 18,600 requirement, somebody who is relying on savings to meet the 18,600 requirement, somebody who's got for their children from their former marriage, they receive maintenance money and they're relying on that, somebody who's working but now is on maternity leave and they want to meet the 18,600 requirement. So there are whole different scenarios relating to the income requirement, and for every different scenario, every different situation, there are specific rules which govern how the particular requirements relating to that situation can be fulfilled. So if you go back 5-6 years, around 2012, it was much simpler. All you had to demonstrate was that there was sufficient money coming in, however it's coming in, sufficient money coming in, that when the husband or wife comes to the United Kingdom, there will not be a burden on the state. And the income requirement that you had to meet for a couple was something in the region of £150, £120, something that simple. Now the income requirement is much higher, and now you have to look at your own specific circumstances and look at what the requirement is that needs to be met. And unfortunately, because it's quite a complex area, we probably don't have enough time to look at that in greater detail today. But in the coming shows, we can look at that in greater detail, look at all the requirements which need to be met. For example, wage slips, bank statements, and P60s, etc., employers' letters, etc., what it is that needs to be submitted. And even looking at something as simple as looking at wage slips that need to be submitted, even with that, there are specific rules which relate to that, whether they have to be original, stamped, what the dates have to be, etc. So it's become quite a complex area of law, and therefore you just need to be very careful, because the vast majority of refusals that you see in practice relate to people who have been unable to meet the income requirement, because they may be earning enough money, but the documentary evidence that needs to be submitted to support that hasn't been submitted or isn't there. So that's something I think is a topic for another day. Inshallah, we should be back next week on Monday at 6 o'clock. Until then, Assalamu alaikum.